Today, let's start with a few number of questions on trigonometric functions for compound angles. Now see question number 1. Prove that cos 9 degree plus sin 9 degree by cos 9 degree minus sin 9 degree equal to tan 54 degree. Left hand side cos 9 degree plus sin 9 degree over cos 9 degree minus sin 9 degree. Now see, you have to bring tan 54 tan. So tan लाने के लिए क्या करना है? tan लाने के लिए देखो, अगर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 9, we get cos 9 by cos 9 1 plus sin 9 by cos 9 tan 9 degree by cos 9 by cos 9 1 minus tan 9 degree. Dividing numerator and denominator by cos 9 degree. Now after this 1 can be written as tan 45 degree plus tan 9 degree as it is by this. We want to write in the form of tan A plus tan B by 1 minus tan 45 degree into tan 9 degree. We can write, because tan 45 degree, the value of tan 45 degree is 1, so 1 into tan 9 वही रह जाएगा, 1 minus tan 9 ही रह जाएगा, tan 45 equal to 1, so it remains unchanged, सिर्फ फॉर्म में चेंज किए, which is equal to, now tan A plus tan B, you know the formula, since tan A plus B equal to tan of A plus B is equal to tan A plus tan B by 1 minus tan A into tan B. Now by this formula we can write this equal to tan A plus B, that is tan of 45 plus 9, tan A plus tan B by 1 minus tan A tan B is equal to tan A plus B is equal to tan A plus B, tan 45 plus 9, which is equal to tan 54 degree. Next question. Prove that cot 2 theta into cot theta, cot 2 theta into cot theta, cot 2 theta into cot theta minus cot 3 theta minus cot 3 theta into cot 2 theta, cot 2 theta minus cot 3 theta minus cot 3 theta, cot 3 theta, cot theta is equal to 1. Minus cot 3 theta, cot theta equal to 1. Now see, in this type of problem, it can be easily seen that 3 theta is equal to 2 theta plus theta. Proof. See here, 3 theta is equal to 2 theta plus theta, 2 theta plus theta. From the question it can be clearly seen that 3 theta is equal to 2 theta plus theta. Then you simply take cot, because you have to bring in terms of cot. आप cot ले लीजिए दोनों साइड में, तो cot 3 theta can be written as cot of 2 theta plus theta.
So cot A plus B can be written as, we have done it before, cot A plus B can be written as in the form of cot A cot B minus 1, cot 2 theta cot A cot B cot 2 theta cot theta minus 1 by cot B plus cot A, or cot A plus cot B, cot 2 theta plus cot theta. This we have broken this in the formula by the formula of cot A plus B. Okay. Now what we got, cot 3 theta equal to this. Now what we have to do? We have to cross multiply. After cross multiplication we will get cot 3 theta into cot 2 theta, cot 3 theta into cot 3 theta into cot 2 theta, cot 3 theta into cot 2 theta plus cot 3 theta is into cot theta, cot 3 theta into cot theta, cot 3 theta equal to this. So here what we are doing? We are doing cross multiplication. Is equal to this into this equal to cot 2 theta, cot 2 theta into cot theta minus 1. This implies, now see, this implies, which is equal to cot 2 theta into cot theta, cot 2 theta into cot theta, cot 2 theta into cot theta. Now take this term to that side. So it will be minus cot 3 theta, cot 3 theta into cot 2 theta. This term also to that side. Take this term also to that side. So minus, this is plus cot 3 theta cot theta. So it will be minus cot 3 theta into cot theta is equal to 1 को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, minus 1 will be plus 1. Proved. Next question is, if 3 tan A tan B equal to 1, 3 tan A into tan B is equal to 1. Prove that 2 cos A plus B is equal to 2 cos A plus B equal to cos of A minus B is equal to cos A minus B. We have to prove this. Now prove. It is given 3 tan A into tan B is equal to 1. So we can easily write tan A tan B is equal to tan A tan B is equal to 1 by 3. Tan A tan B is equal to 1 by 3. Tan A tan B means 1 by cot A, 1 by tan B is equal to 1 by cot B is equal to 1 by 3. This implies 1 by cot A can be written as what? 1 by cot A is equal to 1 by cot A into 1 by cot B is equal to 1 by 3. So cot A cot B is equal to what? Cot A cot B equal to cot A into cot B is equal to 3 by 1. This implies cot A cos A by sin A into cos B by sin B is equal to 3 by 1. We can write it. Means we got cos A cos B by sin A sin B equal to 3 by 1. After this, if we take component and dividend,
then we will get cos A cos B, we will get cos A cos B plus sin A sin B by cos A cos B minus sin A sin B is equal to 3 plus 1, same operation on both sides, by 3 minus 1, which is equal to 4 by 2 is equal to 2. So see, cos A cos B plus sin A sin B is equal to what? We have already done all the formulas. So cos A cos B plus sin A sin B can be written as cos of A minus B, cos of A minus B over, this is cos of A plus B is equal to 2. Now cross multiply, you will get this result. This implies 2 cos A plus B is equal to cos of A minus B equal to oranges. Next question. We'll go to the next question. A plus B plus C is equal to given pi. We know A plus B plus C equal to pi. A plus B plus C is equal to pi, where A, B, C are 3 angles. A, B, C are 3 angles. A, B, C. These are 3 angles. Are 3 angles. A, B, C are 3 angles. It is also given. It is also given if tan A into tan B, if tan A into tan B, if tan A into tan B is equal to 2, if tan A into tan B is equal to 2, then find the value of cos A cos B, cos A into cos B, cos A cos B by cos C. Solution. Cos A cos B by cos C. We have to find this value. So cos A cos B by cos C can be written as cos A cos B by cos C can be written as cos of C is what? From here C equal to pi minus A plus B. A plus B will go to that side. Cos pi minus A plus B, which is equal to cos A cos B over cos pi minus A plus B. See, pi means 2 into 90. So 2 into 90 minus A plus B. When it is in multiples of even number 2 is there. So cos will be cos of A plus B. When it is a multiple of, when this is in the form of 2 into 90, means an even multiple, 2, 4, 6, then cos will be cos A plus B. And in which quadrant it will lie? Cos pi minus A plus B will lie. Pi minus A plus B means pi minus A, it will lie in the second quadrant. It will lie in the second quadrant. In the second quadrant, cos is negative. So minus cos A plus B, which is equal to minus cos A plus B. Now we will, this minus, we take this sign minus outside the bracket. This is equal to cos A cos B over cos A plus B can be written as cos A cos B minus sin A into sin B minus sin A into sin B.
see this equal to, now take this sign inside the bracket. So this will be plus sin A sin B, minus into minus plus sin A sin B. So cos A cos B, cos A into cos B by this will be sin A sin B, sin A sin B, and this will be minus, this minus comes here, minus cos A cos B, minus cos A cos B, right? So what you got? Cos A cos B by sin A sin B minus cos A into cos B. Now from here you see how to bring, this is also given tan A tan B equal to, how to bring in terms of tan A tan B. Means you have to divide both the numerator and denominator by cos A cos B, then you can get the term of tan A into tan B. Cos A cos B से divide कर देंगे दोनों को, numerator and denominator को, then आपको क्या मिल जाएगा, tan A tan B वाला term मिल जाएगा. So divide it by cos A cos B. So we get this equal to 1 by, divide by cos A cos B, 1 by sin A sin B by cos A cos B, sin A by cos A tan A, sin B by cos B is equal to tan B, minus 1 cos A cos B by cos A cos B. What we did? Divide numerator and denominator by numerator and denominator by cos A into cos B, by cos A into cos B. We divided the numerator denominator. So this equal to 1 over tan A tan B. Value is given 2 minus 1. That is equal to 1 by 1 is equal to 1. Okay. Next question. Prove that. Next question is prove that. We will work out a very simple question now. Question sin. Prove that sin pi by 4 plus theta, sin pi by 4 plus theta, plus sin pi by 4 minus theta, plus sin pi by 4 minus theta is equal to root 2 cos theta, is equal to root 2 cos theta. We have to prove it. Now we'll start by the left hand side. LHS. See, LHS is equal to sin A plus B. It is in the form of sin A plus B. Bracket in the form of sin A plus B equal to sin A cos B plus cos A sin B. So sin A cos B cos theta plus cos A sin B, cos pi by 4 cos A sin B sin theta, and this is in the form of sin A minus B plus sin A minus B equal to sin A cos B sin pi by 4 sin A cos B cos theta minus cos A sin B cos pi by 4 into sin theta. Now see, this plus cos pi by 4 sin theta and minus cos pi by 4 sin theta get cancelled. So we get 2 sin pi by 4 cos theta. This is equal to 2 into 1 by root 2. Sin pi by 4 is equal to 1 by root 2 cos theta. That is equal to root 2 cos theta. RHS. Proved. Next question. If cos x is equal to 3 over 5, cos y is equal to minus 24 over 25, where 3 pi by 2 less than x less than 2 pi and pi less than y is less than 3 pi by 2. Find number 1
find number 1 sin x plus y, and number 2 cos x minus y. सॉल्यूशन देखो क्या फाइंड करना है, साइन एक्स प्लस वाई। साइन एक्स प्लस वाई के लिए क्या क्या टर्म चाहिए हमको? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन एक्स चाहिए, कॉस वाई चाहिए, साइन एक्स चाहिए, कॉस वाई चाहिए, और क्या है? कॉस ए साइन बी। कॉस एक्स चाहिए, साइन वाई चाहिए। तो सारे टर्म्स निकालेंगे। तो यहां से कॉस एक्स इक्वल टू 3/5। नाउ सी, यू नो दिस, वी हैव डन इट बिफोर, पहले हम लोग कर चुके हैं। ऑल साइन tan cos, first second quadrant, first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. So when, see here 3π/2 less than x less than 2π, so x lies in which quadrant? x यहाँ पे होगा 3π/2, this is 3π/2, π/2, 2π/2, 3π/2, 3π/2 and 2π। तो x यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे कहीं x लाई करेगा, और y कहाँ पे लाई करेगा? पाई और 3π/2 का बीच में, पाई और 3π/2 का बीच में, मतलब यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे y लाई करेगा। तो आपको फाइंड करने पहले साइन एक्स, एक्स किस क्वाड्रेंट में है? एक्स है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम जानते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वी नो इट। तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? साइन एक्स इज इक्वल टू एक्चुअली होगा प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये ना होगा, ये होगा। तो देखिए यहां एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो साइन एक्स क्या होगा? साइन एक्स पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा? साइन एक्स यहाँ क्या होगा बताइए? साइन एक्स होगा नेगेटिव, दैट इज माइनस ऑफ रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स इज 3/5, सो 3/5 का होल स्क्वायर, 3/5 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू माइनस, इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या आएगा? -4/5 आएगा। ओके, तो साइन एक्स वी गॉट -4/5। Here tan x is not asked, but suppose if the question would be given that find also tan x plus y or tan x minus y, then we would find tan x equal to sin x over cos x, sin x over cos x. Now no need to find now. Next, in the next case, we have to find sin y. Sin y is equal to क्या जानते हैं? Sin y is equal to प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, ये होगा ना? साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, सो साइन वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। बट सी वाई लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन वाई क्या होगा? Therefore, sin y is equal to थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है? नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है? नेगेटिव है। तो यहाँ माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। व्हाट इज कॉस स्क्वायर वाई? वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर, कॉस वाई का कितना दिया हुआ है? -24/25, सो -24/25 का होल स्क्वायर, square root of this. If we simplify, what we get? -7/20, -7/25. So we got the values of sin x and sin y. Sin x equal to -4/5 and sin y is equal to -7/25. Okay. Now you have to find sin x plus y. Number 1. You have to find sin x plus y. So sin x plus number one, sin x plus y can be written as sin a plus b का फॉर्मूला क्या होता है?
उसी में पुट करेंगे साइन ए कॉस बी, दैट इज साइन एक्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी. Now put the value sin x cos y. Sin x is equal to how much? Minus 4 by 5. Minus 4 by 5 into cos y is equal to minus 24 by 25. This cos y is equal to minus 24 by 25 plus cos x. Cos x given 3 by 5 plus 3 by 5 into sin y is equal to, अभी जस्ट कैलकुलेट किए, साइन y इज इक्वल टू माइनस 7 बाई 25 माइनस 7 ओवर 25. नाउ सिंप्लीफाई. इफ वी सिंप्लीफाई वी विल गेट दिस इज 196 बाई 125 minus 21 by 125. That is 196 minus 21. That becomes 75. 75 over, that is 75 over 125. We get 3 by 5. Number 1. Number 2, cos x minus y. Cos of x minus y. Put the formula of cos x minus y. Cos x cos y. Cos x cos y plus sin x sin y. Sin x into sin y. Put the values. Cos x given 3 by 5. Similarly 3 by 5 into cos y is equal to how much? Minus 24 by 25 plus sin x. Sin x is equal to, we got the value of sin x, we calculated. क्या कैलकुलेट किए थे? minus 4 by 5 minus 4 by 5 minus into sin y is equal to minus 7 by 25. Minus 7 over 20. Minus 7 over 25. So minus 72 and plus 28 by 25. So what do we get? If we calculate, if we simplify, this is minus 44 by minus 44, this is 125 minus 44 by 125. Next question. Now we will go to the few number of formulas. कुछ फॉर्मूला लिखेंगे, इसको याद रखना है. साइन सी प्लस नंबर 1, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 into cos c minus d by 2. Number 2, sin c minus sin d is equal to, sin c minus sin d is equal to 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. Number 3. So we got sin c minus sin d equal to 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. Similarly, cos c plus cos d, cos c plus cos d is equal to 2 cos c plus d by 2, 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. Number 3. Number 4, cos c minus cos d, cos c minus cos d is equal to minus 2 sin c plus d by 2
into sine c minus d by 2. Into sine c minus d by 2. We can write it in this way also, 2 sin c plus d by 2 into sine d minus c by 2. अगर माइनस नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 sin c plus d by 2 into sine d minus c by 2. Okay, next. So see, these are the formulas. You write that these are the formulas to transform sum or difference into product. Here what we are doing, we are transforming sum, this plus is here, sum or difference into product. So what are the uses of these formulas? Sum or differences or difference will be transformed into product. Will be transformed into product. This is the use. Similarly, formula number 5. Formula number 5, 2 sin A cos B, 2 sin A, 2 sin A, 2 sin A cos B, that is equal to, if we write sin A plus B plus sin A minus B, see, you will get 2 sin A cos B. How? Sin A plus B, just एक तो दिखाते हैं, एक तो शो करते हैं, 2 sin A cos B. How does it come? Sin A plus B, sin A cos B, sin A cos B plus cos A sin B, cos A sin B. sin A plus B को तोड़े, सिमिलरली sin A minus B को तोड़ेंगे, प्लस sin A cos B, sin A cos B माइनस cos A sin B. दोनों का फॉर्मूला लिख दिए, sin A plus B का और sin A minus B का. तो देखिए cos A sin B कट जाएगा, cos A sin B कट जाएगा, प्लस एंड माइनस. सो क्या मिलेगा? What do we get? Sin A cos B plus sin A cos B, 2 sin A cos B. So this 2 sin A cos B is written as sin A plus B plus sin A minus B. We remember in this way, sin plus, plus of sin minus. Sin plus means A plus B, plus sin minus, minus means A minus. We remember in this way also. 5. Now see, we will go to next, 2 cos A sin B. 2 cos A sin B can be written as 2 cos A, 2 cos A sin B. Just think 2 cos A sin B. If we think, we will get sin plus minus sin of minus, sin प्लस, यह साइन माइनस लिख लेते हैं. फिर क्या करेंगे बीच में, अगर साइन ए प्लस बी, बीच में प्लस लेंगे ना माइनस लेंगे. 2 cos A sin B में माइनस लेंगे. अगर माइनस लेते हैं तो देखिए cos A sin B वाला पार्ट रह जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट 2 cos A cos B. नेक्स्ट आएंगे 6, 7, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B. This can be written as cos plus means A plus B, cos plus plus. अगर cos माइनस करते हैं, देखते आता है कि नहीं, cos प्लस प्लस cos माइनस करते हैं, A प्लस cos A cos B माइनस sin A sin B. यस, और यहाँ cos A cos B. So 2 cos A cos B will get, and cos sin A sin B कट जाएगा. 7, 8. Next one more is left, that is 2 sin A sin B, 2 sin A sin B, 2 sin A sin B. If we do here cos minus, cos of A minus B, then what should we write? Cos A plus B or cos A minus B? Cos A plus B or cos A minus B? Minus of cos, माइनस ऑफ, अगर cos A प्लस B लिखते हैं तो आ जाएगा. इसको देख लीजिएगा, मेंटली कैलकुलेट करते रहिएगा. ऐसे याद रखना कुछ है नहीं, तो मेंटली कैलकुलेट करेंगे तो हर एक रिजल्ट हमको मिल जाएगा. 2 sin A cos B, 2 cos A sin B, 2 cos A cos B, 2 sin A sin B.
Now, based on these formulas, we will work out some questions now. Suppose question number 1, prove that cos 18 degree minus sin 18 degree is equal to root 2 sin 27 degree. Root 2 sin 27 degree. What to prove? Left hand side. We'll start with LHS, that is equal to cos 18 degree minus, see sin 18 डिग्री cos c minus sin c, अगर 18 को c मानते हैं तो cos c minus sin c का कोई फार्मूला यहाँ है नहीं, cos c minus cos d का है, तो इसको चेंज करना होगा cos में. दिस sin 18 degree can be written as what? Sin 18 degree can be written as 90 minus 72 degree. 90 degree minus 90 degree minus 72 degree. So this equal to cos 18 degree minus sin 90 minus theta is equal to cos theta, cos 72 degree. Now see, we got in this form cos c minus cos d, cos c minus cos d in this form. So we can write it as cos c minus cos d. What? Cos c minus cos d can be written as 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2. 2 sin c plus d by 2, 2 sin c plus d by 2 into sin 2 sin c plus d by 2 into sin c minus, here is minus sign, but I am not writing minus, so I am not writing this minus sign. So 2 sin c plus d by 2 into sin, we can write d minus c by 2, sin 72. We should practice in both ways. 72 minus 18 by 2. 72 minus 18 by 2. That is equal to 2 sin 18 plus 72 by 2. That is equal to sin 90 by 2, sin 45 degree into sin 72 minus 18. How much? 54. 54 by 2, sin 27 degree. That is 2 into sin 45, drop 1 by root 2, 1 by root 2 to sin 27 degree. That is equal to, we got root 2 sin 27 degree. Proved. RHS. Proved. Next question. Prove that. Next question. Question number 2. Prove that sin 5x plus sin 3x plus sin 3x over cos 5x plus cos 3x is equal to tan 4x. So what do we do here? Simply we put the formulas of sin c plus sin d and cos c plus cos d. Sin c plus sin d. You know the formula sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2. So left hand side is equal to sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2, 5x plus 3x by 2 sin c plus d by 2 to cos c minus d by 2, 5x minus 3x by 2 by cos c plus cos d. Cos c plus cos d, this formula. Cos c plus cos d, this formula. That is 2 cos c plus d by 2, 5x plus 3x by 2, 5x plus 3x by 2 into cos c minus d by 2, cos 5x minus 3x by 2. So we get 2 cancelled, sin cos 5x minus 3x by 2 cancelled. So sin 5x plus 3x by 2 is equal to 8x by 2 sin 4x. Sin 4x by here also cos this is also 4x, cos 4x, which is equal to tan x. RHS. Proved. Now see, next question.
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. प्रूव दैट क्वेश्चन प्रूव दैट sin x plus sin 2x sin x plus sin 2x plus sin 4x plus sin 5x over cos x plus cos x plus cos 2x cos x plus cos 2x plus cos 4x plus cos 5x is equal to, you have to prove, is equal to tan 3x, is equal to, you have to prove tan 3x, you have to prove tan 3x. Left hand side, LHS is equal to, now see, you have to take two numbers in a group such that we take, suppose, sin 5x plus sin x. We are taking these two terms in one group, and in the other group we are taking sin 5x plus sin x and sin 4x plus sin 2x. Why? See, why have you taken this sin 5x and sin x? Why not 2x and 5x? Why are you not taking 5x and 2x? See, when we put this in these formulas, we will get 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2. So 5x plus, if we take 5x and 2x, so 5x plus 2x by 2, 5x, 7x by 2, not exactly divisible. That is the reason we are not choosing 5x and 2x. We are not choosing 5x and 2x. We are taking 5x and x, because 5x plus x by 2, 6x by 2, it is exactly divisible. 6x by 2 is equal to, we will get 3x. In the same way, in the denominator, we will write cos 5x plus cos x, cos 5x plus cos x plus cos 4x plus cos 4x plus cos 2x. See, क्यों हम ऐसा ग्रुप बनाए थे? अब पता चलेगा sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2, 2 sin c plus d by 2, 2 sin c plus d by 5x plus x by 2, that is 6x by 2, that is equal to, right, 5x plus x by 2, write fast, into cos c minus d by 2, 5x minus x by 2, plus, this is for this term. Now sin c plus sin d, again same formula, 2 sin c plus d by 2, 4x plus 2x, 4x plus 2x by 2 into cos 4x minus 2x by 2. Okay, cos c plus cos d, 2 cos c plus d by 2, 5x plus x by 2, into cos c minus d by 2, 5x minus x by 2. Similarly, we will break this also, इसको भी तोड़ो, तो 2 cos 4x plus 2x by 2 into cos 4x minus 2x by 4x minus 2x by 2. Simplify करो आप, that is equal to 2 sin, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 sin 3x cos 5x minus x by 2, 4x by 2, that is equal to cos 2x plus 2 sin 4x plus 2x, 6x by 2, that is equal to 3x, 4x plus 2x by 2, 3x, 4x minus 2x by 2, 2x by 2, that is cos x, right? Y will get 2 cos 5x plus x, 6x by 2, that is equal to 3x, into cos 5x minus x by 2, 4x by 2, 2x, cos 2x plus
2 cos 4x plus 2x by 2, 6x by 2, that is 3x, cos 4x minus 2x x by 2, 2x by 2, that is equal to cos x. Now see, what is common here? From the top, we are getting common 2 sin 3x. 2 sin 3x is common. 2 sin 3x is common. So take 2 sin 3x common. 2 sin 3x common. We'll get cos 2x plus cos x by, नीचे क्या कॉमन जाएगा? नीचे देखिए 2 cos 3x कॉमन है, नीचे 2 cos 3x कॉमन है, तो 2 cos 3x कॉमन, 2 cos 3x कॉमन, so we'll get cos 2x plus cos x, right? This will get cancelled, 2 cancelled, sin 3x by cos 3x is equal to tan 3x into RHS. Proved. Next, today we will do 2 more questions. You can write it. Next question. Prove that. Very, very important question. Cos 10 degree into cos 30 degree, cos 30 degree into cos 50 degree, cos 50 degree into cos 70 degree into cos 70 degree is equal to how many terms are there? Cos 10, cos 30, cos 50, cos 70 degree is equal to 3 over 16. 3 over 16 will be 3. Okay? Proof. Left hand side, LHS is equal to, देखो LHS में क्या है? Cos 30, cos 50, cos 30, cos 50. If we keep a space here, like space, यहाँ कुछ लिखेंगे बाद में एडजस्ट करने के लिए, तो अभी इसको लिखिए cos, if we take cos 30, cos 50, okay, cos 30, we know the value of cos 30 from the table, cos 30, cos 50, अगर ये दोनों को लेते हैं और ब्रैकेट का अंदर लेते हैं, या थोड़ा सा जगह छोड़ो, एडजस्ट करेंगे, cos 10 और cos 70, cos 10, cos 70, that is cos 70 should be written at first, cos 70 into cos 10. क्यों ऐसा लिखे? देखो इसको हम 2 cos A cos B फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, इसको हम 2 cos A cos B, हम 2 cos A cos B का फॉर्मूला हम जानते हैं, cos A plus B plus cos of A minus B. तो यहाँ अगर हम 2 into करते हैं तो 2 को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो शुरू में इधर हाफ लाना पड़ेगा, हाफ इंटू इतना, हाफ इंटू, यहाँ अगर 2 लेते हैं तो यहाँ हाफ करना पड़ेगा, ओके, एडजस्ट करने के लिए. तो आप इसको आप लिखो हाफ इंटू cos 30 का वैल्यू √3 over 2 cos 50 डिग्री, ओके, और 2 cos A cos B, 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है? cos प्लस, दैट इज cos ऑफ, प्लस मतलब cos A plus B, cos 70 plus 10 और प्लस cos of A minus B, 70 minus 10, right? Now this can be written as √3 over 4, √3 over 4 cos 50 degree into ब्रैकेट में cos 80 degree, cos 80 degree plus cos of 60 degree. अब इसमें एक चीज देखना है, जो हम 2 cos 70 cos 70 और cos 10 को एक साथ क्यों लिए? देखो इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद एक वैल्यू मेरा ऐसा आना चाहिए जो टेबल में हो. टेबल में मेरा क्या है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है. तो एक
कोई एक वैल्यू को यहाँ अंदर लाना है, तो 70 और 10 को लेंगे तो मेरा एक वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 70 और 10 जब एक साथ ले रहे हैं तो देखो 70 माइनस 10 इज इक्वल टू cos 70 माइनस 10 इक्वल cos 60 मिल गया। तो अब हम cos 60 का वैल्यू पुट करेंगे तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा √3/4 cos 50 डिग्री into cos 80 plus cos 60. So cos 60 is equal to how much? Half. Cos 60 is equal to half. अब इसको आप ब्रैकेट तोड़िए, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या आएगा? ब्रैकेट तोड़ेंगे तो आएगा √3 यहाँ 4 cos 50 into cos √3/4 into cos 80 into cos 50 आएगा ये, और क्या आएगा? और एक आएगा √3/8 cos 50 आएगा, तो √3/4 into cos स्पेस रखो, ठीक रहेगा, इंटू cos 80 इंटू cos 50 प्लस √3/8 हाफ इंटू √3/8 cos 50 इज इक्वल टू। तो एक काम हम लोग यहाँ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अगर इसको हम 2 cos A cos B फॉर्म में लाना चाहते हैं, 2 cos A cos B क्या होता है? 2 cos A cos B is equal to 2 cos A cos B, 2 cos A cos B equal to, we know that this is equal to cos A plus B plus of cos A minus B, ये हम जानते हैं, प्लस ऑफ cos A minus B जानते हैं। तो अगर इसका हम 2 करते हैं, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, एडजस्ट करना होगा, तो यहाँ इंटू 1/2 कीजिए तो एडजस्ट हो गया, 2 कट के वही रह गया, इट रिमेन्स अनचेंज्ड, 2 कट के वही रह जाएगा। ऐसे क्यों किए? इसको 2 cos A cos B फॉर्मूला में लाने के लिए, 2 cos A cos B फॉर्मूला में लाने के लिए, तो √3/8 4 2 8 and 2 cos A cos B is equal to cos A plus B, that is cos A plus B 80 plus 50 cos A plus B plus cos A minus B plus cos of A minus B 80 minus 50, right? Plus √3/8 into cos 50 into cos 50, that is equal to √3/8 into cos 130, give the curly bracket, cos 130, so cos 130 plus cos of 80 minus 50 is equal to cos 130, and here write cos 130, write one more step, cos 130 130 degree plus cos of 30 degree into plus √3/8 cos 50 degree. Now see, you have to bring 3/16, means all these terms will be removed, this cos terms will be removed. How to cancel this cos? Now cos 130, अब देखो cos 130 को हम 50 का टर्म में तोड़ सकते हैं ना, किसका टर्म में तोड़ सकते हैं? 50 का टर्म में तोड़ सकते हैं, yes. If we do 180 minus 50, we will get 130, that is equal to √3/8 cos 130, we are multiplying also, cos 130 means cos of 180 minus 50, right? √3/8 into cos 130 plus √3/8 into cos 30 plus √3/8 into cos 30 का वैल्यू √3/2, right? √3/8 into cos 30 plus this term √3/8 cos
plus this term root 3 by 8 cos 50 degree. Now see, root 3 by 8 into cos 180 minus 50 is how much? Cos 180, that is 2 into 90. Cos 180 minus 50 means 2 into 90. 2 into 90 minus 50. What I said in the last class, 2. This is even number. When it is even, cos will be cos. When it is even, cos will be cos. When it is odd, cos will be sin. So cos 50 degree, and you have to अब देखना है इसका साइन प्लस होगा ना माइनस होगा. All sin tan cos, all sin tan cos, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. 2 into 90 minus 50 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 2 into 90 minus 50. It lies in the second quadrant. तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा. This is minus cos 50 degree. This is minus cos 50 degree. So root 3 by 8 into minus cos 50 degree plus root 3 into root 3, 3 over 16, 8 to just 16 plus root 3 by 8 cos 50 degree. See, root 3 by 8 cos 50 degree and minus root 3 by 8 cos 50 degree, these are cancelled. So you got 3 over 16, that is equal to RHS. Next question. One more. Next question. Prove that cos x minus cos y का whole square. Prove that cos x minus cos y का whole square. Cos x minus cos y का whole square. Cos x minus cos y का whole square plus sin x minus sin y का whole square plus sin x minus sin y. Sin x minus sin y का whole square is equal to sin x minus sin y is equal to 4 sin square. 4 sin square x minus y by 2. 4 sin square x minus y by 2. Now, how to prove? Left hand side, LHS.